Hello students. So today we are going to cover the lecture of circular linked list. In previous lecture I told you about a little bit introduction of stack. So you all have studied linked list and today we're going to study about circular linked list. So the linear linked list is a part of data structure that connects one node of a linked list to the other node. Basically what happens in a singly linked list is that we have the address of the next node in the previous node, but in circular linked list the last node of the list contains a pointer to the first node of the list. We can have circular singly linked list as well as circular doubly linked list. For example, in this is a kind of circular linked list. Here the this is our head pointer, this is not, and this one is a head node. This is not our head, this is a head node, this is not a node, this is a pointer. The head node, head pointer contains the address of the first node, which is this one. Now this one will contain the address just like in a linear linked list we had the nodes containing the address of the further nodes. Here the first node contains two parts. First is its data part, the second part is its address part. Now first node will contain the address of the second node. Similarly, the second node will contain the address of the third node. Now what happens in the circular linked list, how is it different from a linear linked list, is that in a singly linked list we had in the last node the address was null, right? But here you can see that the last node is pointing to the first node. So what happens in a circular linked list is that the node connects the last node of the linked list, connects the or points to the head node. Okay. We traverse now. How a traversal happens in a circular linked list? Now we will traverse a circular linked list until we reach the same node as we started. See how long is the traversal operation gonna go? We will start from here, we will go to the first node and then we will traverse to the second node. Through the second node we will traverse to the third node, and when are we going to stop? We will stop when the next node, when the third node starts pointing to the first node. So you can, like when you are going to prepare the code, you can use a condition where you can apply the loop like while loop. Now we will keep on printing these nodes while the last node we will take a temporary variable pointer here. When we will do traversal, I will explain this to you in details, but till then just understand, when we do the traversal in a circular linked list, we keep on traversing nodes till we reach till the last node starts pointing to the head node. Now we will traverse a circular linked list until we reach the same node. I'm just explaining this to you in the content written on the board. We will traverse the circular linked list until we reach the same node as where we started. The circular singly linked list has no beginning and no ending. There is no null value present in the next part of any nodes. Circular linked lists are mostly used in task maintenance of the operating systems. There are many examples where circular linked lists are being used in computer science, including browser surfing. See, a circular linked list has no beginning and no ending. From this linked list, you can see that this is a circular linked list. Here, you cannot you cannot just predict that this is my first node or this is the beginning of this linked list and this is the ending. There is no beginning and there is no end. Okay. We just have a head pointer and we just have the last node, right? See, and how do we traverse this circular linked list? We traverse it till we reach the same node where we started. Okay. The circular linked lists are mostly used in task maintenance in operating systems. What's the
job of circular linked list is a circular linked list like maintains the task of OS operating systems. Like while you are browsing or surfing a record of pages visited in the past by the user, like when we do surfing on the internet, then we have a record called history that keeps the records of the pages you visited, right? That happens in Google Chrome or any other browser you surf. So that is because of circular linked list. Like that uses it. I'm not saying that it just uses the concept or idea of basically of circular linked list, where you can traverse or where you can travel the previously visited websites or pages, right? Or while using, you might sometimes have visited like e-commerce websites, Flipkart, Amazon, where you can like surf the pages, where you can swipe left and swipe right using your fingers, the products displayed on the like website. Okay, that also uses the concept of circular linked list. And the circular linked list can be accessed by clicking on the previous button. That's just clear to you. Now, how is the memory representation of circular linked list done? Now, just see this image. This image shows the memory representation of a circular linked list. How does it display the memory? We can have more than one number of linked lists in memory with the different start pointers pointing to the different start nodes in the list. The last node is identified by its next part, right? Memory representation of a circular linked list containing marks of a student in 4 subjects. ये जो इमेज है इसमें एक बच्चा के मार्क्स डिस्प्ले कर रखे हैं हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में. However, the image shows us a glimpse of how the circular list is being stored in the memory. ये इमेज जस्ट एक आपको ग्लिम्स दिखा रहा है कि सर्कुलर लिस्ट कैसे स्टोर की जाएगी मेमोरी में. The start of the head of the list is pointing to the element with the index 1 and containing 13 marks in the data part and 44 in the next part. जो ये स्टार्ट है हेड का लिस्ट, जो स्टार्ट है ये हेड है इस लिस्ट का, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है आपकी इंडेक्स 1 पे जिसमें डेटा पार्ट में है 13, ओके, और 4 है उसके नेक्स्ट पार्ट में, which means that it is linked with the node being stored at 4th index of the list. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जिसका हेड नोड है ये आपका पॉइंट कर रहा है कहाँ पर, 13 पे. अब 13 तो इसका जस्ट डेटा पार्ट है, कितने इसके मार्क्स आए, इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस पार्ट में है आपका 4, विच मीन्स कि अब ये पॉइंट कर रहा है उस प्लेस इंडेक्स पे जहां 4 है, ठीक. सो दिस इज पॉइंटिंग हियर. अब 4 पे जाएंगे, 4 पे इसके क्या एक डेटा पार्ट में है 15 एंड इसके नेक्स्ट नोड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में है 6. अब हम यहाँ से विजिट करेंगे 6 पे. So basically this just gives you an idea how circular linked list can be traversed. अब 6 से हम यहाँ पर आए, यहाँ के डेटा पार्ट में आपका 19 एंड इसके नेक्स्ट नोड पार्ट में है 8. सिमिलरली लाइकवाइज हम यहाँ पर गए 8 से 8 पे डेटा पार्ट में है, 8 इंडेक्स पे डेटा पार्ट में 57 और इसके नेक्स्ट पार्ट में है 1. अब 1 किसका एड्रेस था, हेड नोड का. सो अब हम वापस इस लास्ट में पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करने के बाद में कहां पर आए, हेड नोड पे वापस. तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये हमने आपको एक जस्ट आइडिया दिया है. We can also have more than one number of linked lists in memory with different start pointers pointing to the different start nodes of the list. हम एक से ज्यादा लिंक लिस्ट भी मेमोरी में एक्वायर कर सकते हैं, ओके, जिनके डिफरेंट स्टार्ट पॉइंटर्स होंगे और वो पॉइंट कर रहे होंगे डिफरेंट स्टार्ट नोड्स को. The last node is identified by its next part which contains the address of the start node of the list. जो लास्ट नोड होता है आपका उसे आइडेंटिफाई किया जाता है नेक्स्ट पार्ट से जो देता है आपका एड्रेस स्टार्ट नोड का. What I mean to say here is
ये जैसे हमारी लिंक लिस्ट थी, सर्कुलर लिंक लिस्ट मेमोरी में, इसका लास्ट नोड किसे पॉइंट कर रहा था? आपका हेड नोड को और फर्स्ट नोड को, राइट? We must be able to identify the last node of any linked list so that we can find out the number of iterations which need to be performed while traversing the list. हमें पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लास्ट नोड कौन सा है लिंक लिस्ट का, जिससे हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म कर सके ट्रैवर्सल के टाइम पे. नाउ ऑपरेशंस ऑन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्या क्या ऑपरेशंस होते होंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे? जो एक लीनियर लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस होते थे, वही ऑपरेशंस आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन. अब इंसर्शन में भी टाइप्स होते हैं. इंसर्शन आप कहाँ कर सकते हैं? एट द बिगिनिंग और एट द एंड. जब आप इंसर्शन आप बिगिनिंग में करेंगे या स्टार्टिंग में करेंगे, एडिंग अ नोड इनटू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा. उसमें एक नोड आपका ऐड होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग पे. एडिंग अ नोड इनटू सर्कुलर लिंक लिस्ट एट द एंड, उसी तरह कोई नोड हम ऐड करेंगे अगर एंड पे, तो वो आपका इंसर्शन एट एंड कहलाएगा. डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग. डिलीशन में भी आपके होंगे वही दो पार्ट्स जो आपके इंसर्शन में थे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड. रिमूविंग द नोड फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट एट फ्रॉम द बिगिनिंग. डिलीशन एट बिगिनिंग मतलब कि आपको कोई नोड रिमूव करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट से जो बिगिनिंग में है या स्टार्टिंग में है. रिमूविंग द नोड फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट एट द एंड. अब डिलीशन आपका कहाँ से हो सकता है? एक बार हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं. नोड आपका ये भी डिलीट हो सकता है, नोड आपका ये भी डिलीट हो सकता है. इंसर्शन आपका यहाँ पे भी पॉसिबल है एंड इंसर्शन आपका इधर भी पॉसिबल है. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हमें इंसर्शन, अभी मैं एक शॉर्ट में आपको समराइज करके बताती हूँ, ये बाद में हम जब करेंगे ट्रैवर्सल तब करेंगे, आपको पूरे डिटेल में जाएंगे हम. अभी अगर मुझे इंसर्शन करना है इसी सर्कुलर लिंक लिस्ट में, so what will I have to do? I will just add address of the head node which is stored in this head pointer. And what is the other thing that I will have to do? I will have to make the last node point to the new node which I am going to insert here. This is how insertion at beginning happens. And how does insertion at end happens? That is also almost the same concept. When I want to insert a node here, जब मैं node last में insert करूंगी तो अभी ये node point कर रहा है किसको? head node को. तो मैं इसमें एड्रेस डालूंगी इस न्यू नोड का, राइट? एंड न्यू नोड पॉइंट करेगा हेड नोड को. ओके, सो दिस इज हाउ आई विल डू इंसर्शन एट एंड लाइकवाइज आई विल डू डिलीशन, राइट? नाउ डिलीशन एट एंड, रिमूविंग द. सर्चिंग भी होती है आपकी. सर्चिंग कैसे होगी? कंपेयर ईच एलिमेंट ऑफ द नोड विद द गिवन आइटम एंड रिटर्न द लोकेशन at which the item is present in the list, otherwise return null. आपको जो भी नोड आपका गिवन है उसे हम उसे मुझे सर्च करना है. सपोज मुझे कोई भी एलिमेंट सर्च करना है अपनी लिंक लिस्ट में. सो हाउ विल आई डू इट? I will compare it with all the nodes of the linked list and return the location. मैं उस अगर सपोज मुझे वो मैच कर जाती है वाली, वो नोड मैच कर जाता है, तो मैं उसकी लोकेशन रिटर्न करूंगी जहां पर वो आइटम मिला. अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूंगी? नल, एलिमेंट नॉट फाउंड और नोड नॉट फाउंड. विजिट ईच एलिमेंट. हाउ दिस ट्रैवर्सल हैपेंस? visiting each element of the list at least once in order to perform some specific operation. This is what happens while you do traversal in any data structure. Traversal means visiting. What we do, we just visit every node until we reach the end of the list, and whatever operation we want to perform, then we do it. Okay.
Now traversal operation. I'm going to discuss with you the traversal operation of a circular linked list. In a conventional linked list, what do you mean by conventional linked list? In a linear linked list, we traverse the list from the head node. What we used to do? We used to traverse it. We used to visit every node of the linked list starting from the head node, and when we stopped traversing, we stopped traversing when we reached null. Okay. In a circular linked list, we stop traversal when we reach the first node again. Following is the code for linked list traversal. Now we should go to code. We're going to understand the code for linked list traversal. See, this is your code for linked list traversal. This is just a function I've created to as an example to explain it to you. Void print list struct node asterisk first. So here I've created, first of all, I've created a structure node. Now struct node. Now what is this node going to contain? The structure going to contain. The structure will, I'm using the structure node so that to create a node. Okay. Here I've taken two things. One is a data part which will be of the int type. The other is the address part or pointer. Okay. This is my pointer or address or link, you can say. Okay. Void print list struct node first. मैंने एक नोड बनाया फर्स्ट, इतना अंडरस्टूड है. स्ट्रक्चर क्यों यूज किया मैंने? स्ट्रक्चर से एक मैंने नोड क्रिएट किया है जिसके दो पार्ट्स होंगे. व्हाट डज द स्ट्रक्चर कंटेन? स्ट्रक्चर कंटेन्स वेरिड डेटा टाइप्स. हियर आई हैव टेकन data of integer type and pointer or link or address of which is the pointer. Just you can make it clear. तो मैंने एक इंटीजर टाइप कर लिया और एक डेट एड्रेस लिया. ओके. अब क्या कर रहा है मैंने इस फंक्शन में? मैंने एक स्ट्रक्ट फर्स्ट नाम का नोड क्रिएट किया, फिर मैंने एक टेम्पररी पॉइंटर ले लिया, ठीक, जो अभी फिलहाल पॉइंट कर रहा है फर्स्ट को, फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को. अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कीप प्रिंटिंग नोड्स टिल वी रीच द फर्स्ट नोड अगेन. और वो प्रिंटिंग कैसे होगी? डू प्रिंट temp data. Now I will explain it with this example. Suppose this is my circular linked list. This is my head pointer which is pointing to this first node. Okay. We are just doing traversal here. This is the second node of my circular linked list. If this is my last node, where is this going to point to? अगर ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है इसमें एड्रेस लास्ट नोड में नल नहीं होगा. एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली पॉइंट टू द हेड नोड. व्हाट आई एम डूइंग हियर कि अगर फर्स्ट नल नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट खाली नहीं है, उस टाइम पर मुझे क्या करना है? इन्हें मैं प्रिंट कराती रहूंगी एक डू वाइल लूप लेके. डू वाइल क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है टेम्प के डेटा को. टेम्प मेरा टेम्पररी पॉइंटर है, ठीक है, जो अभी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड पे. ठीक. सो अब सबसे पहले क्या होगा? प्रिंट टेम्प डेटा. सबसे पहले प्रिंट होगा आपका ए टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट. अभी ये है, ये नोड इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अब क्या करो? ए प्रिंट हो जाए, उसके बाद में इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाए. टेम्प मेरा इधर आ गया, ठीक.
फिर बी प्रिंट हुआ मेरा, और ये कब तक चलेगा ऑपरेशन? जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। मतलब अब मेरा टेम्प का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है? टेम्प क्या था? पॉइंटर था। तो अब मेरा जो ये पॉइंटर है वो किधर पॉइंट कर रहा है? my temp is now pointing to the first node or head node. ठीक? So what we are going to do? We are going to stop here, and this will be our end of the, and this is how we are going to exit from this loop. Let me explain it to you again. This is my function to print every node of a circular linked list. I've taken a node structure to create a node, and that structure part is going to contain two parts. One is the data part of integer data type. The other one is a link or address part, which or you can also use next address part. Now what we are going to do, अब मैंने एक नोड क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं तब तक उसे ट्रैवर्सल कराऊंगी जब तक मेरे नोड्स फर्स्ट नोड पे नहीं चले जाते। तो मैंने एक डू व्हाइल लूप लगाया, प्रिंट कराया मैंने इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट का डेटा, एक एक नोड का डेटा, कब फिर और वो जो एक टेम्परेरी पॉइंटर यूज किया मैंने सबसे पहले जो पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को, फिर मैंने क्या करा, इसको प्रिंट कराया, टेम्प को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हेड, देयर इज ओनली वन हेड और देयर इज ओनली वन फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इन एवरी लिंक लिस्ट। तो मैं ऑब्वियसली बात है हेड को मूव नहीं करा सकती, मैंने टेम्प को, यहाँ पर टेम्प को, मेरे अभी टेम्प था, ए प्रिंट कराया, टेम्प को मूव कराया, बी प्रिंट कराया, फिर ये वाइल कंडीशन मैंने लगा दी, कब तक होगा ये? जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट, so I'm going to stop here and exit from this loop. Okay, so this is how we do traversal in a circular linked list. In the next part I'm going to discuss with you the insertion and deletions are clear to you, and I will see you in next lecture. And if there is any doubt, you can always comment on the comment section. Thank you so much.